Assalamu alaikum, dear kids. Keeping promises. You keep your promise? Is it good to keep our promises? So let's come towards the reading. He let me down once. She too disappointed me before. These are remarks nobody is happy to hear. It is generally said a promise is a debt. Have you ever reneged on a promise? Failure to keep a promise demonstrate that you are unreliable, untrustworthy, erratic, inconsistent, undependable, and unpredictable. It is far better not to make any promises than to make a promise and renege on it. What did you do on your last birthday? Did you keep all the promises you made to yourself? How many promises did you keep on your birthday before the last? You promised to love your mother more. You promised to take more care of the family. You also promised to relax more and loosen up. How far did you keep the above promises? I know you will come up with excuses that the volume of work increased in the office, which makes you tired whenever you get home, that the cold weather lasted too long, which disoriented your entire well-being. Always remember that if there is true love, no excuse can and should stand in your way. To fulfill your commitments to your mom and dad, true love leads to genuine care for the family. If you keep your mom and dad happy, the reflection bounces back on you, which leads to overall family happiness. Remember, never make a promise you cannot keep. जी बच्चों, इस नज़म में, इस पोइम में जो शायर है उन्होंने हमें ये बताया है कि जो शख्स अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता है लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, और जब कोई हमें ये कहता है कि तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ जो भी वादा करें हम उस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करें, और रिश्तों से ज्यादा, रिश्तों की मोहब्बत से ज्यादा दुनिया का कोई भी काम जरूरी नहीं है। जब हम वादा खिलाफी करते हैं तो फिर हम उसके बहाने तलाश करते हैं कि यूं ना होता तो यूं हो जाता, यूं ना होता तो यूं हो जाता, जबकि ये सरासर गलत है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जो भी वादा करें उसको पूरा करें। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी जानते हैं। डिसअपॉइंटेड, नाउम्मीद, प्रॉमिस, वादा, फेलियर, नाकामी, डिमॉन्स्ट्रेट्स, जाहिर करता है, अनरिलायबल, जिस पर एतमाद ना किया जा सके, टायर्ड, थक जाना, रिमेंबर, याद, रिफ्लेक्शन, अक्स, हैप्पीनेस, खुशी। सो नाउ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर मेक अ प्रॉमिस यू कैन नॉट कीप।